Okay, assalamu alaikum everyone. Let's begin. So today, in this particular session, we are going to be doing this paper, March 2022, paper 4, variant 2. इसका देखा एक ही variant होता है. इस mechanics का paper हम ये कर रहे हैं इस session के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है? Let me just adjust my pen size. Zoom in होता है. GSGVF, अगर आपने कोई नाम सही रखा होता, I could call your name as well. I don't know how to call out your name like this. Okay, let's begin. So in this session, we are going to be covering February, March 2022. So basically March 2022, paper 4, mechanics paper. हम ये discuss करें, ठीक है? Okay, now let's start right away. So just to look at the instructions first. आपको ये याद रखना है, G की value हम यहाँ पे 10 use कर रहे होते हैं. That simplifies calculations. Working पूरी show करनी है. At least 4 significant figures तक आपने सारी working show करनी है. ठीक है? Just keep that in mind. And let's start right away with our first question. Okay. So there's a crane that is used to raise a block of mass 600 kilograms vertically upwards at a constant speed through a height of 15 meters. There is a resistance to the motion of the block, which the crane does 10,000 joules of work to overcome. Okay, so there is some resistance, and the work done against resistance is given, that is 10,000 joules. We've got the mass of the block, that is 600 kilograms, and the speed is constant. That's another important thing. Speed change nahi ho rahi hai. Our height jo aapki increase ho rahi hai, that's 15 meters. We have to find the total work done by the crane. So we actually have to figure out the work done by the driving force. So we have to figure out karna hai. We've got some values. We've got the value for work done against resistance, and we've got some height jitna aapne us block ko raise kiya. So if you think about it, we can actually use the work energy principle here. We could say work done by the driving force, that is equal to change in kinetic energy plus the change in potential energy plus the work done against resistance. Now, what do we know about here? We know what the values of all of these things are. How? Because हमें पता है kinetic energy तो change नहीं हो रही. Why? Because the speed is constant. If the speed is constant, kinetic energy speed पर depend कर रही होती है. Kinetic energy change हो ही नहीं रही. So there's no change in kinetic energy. This number is going to be 0, the first term. Then change in potential energy. आपकी height कितनी increase कर रही है? You're given that 15. Mass कितना है? 600 kilograms. तो आपकी potential energy में increase किस तरह आ जाएगा? Mass, that's 600 into G, mgh, right? So G is 10, and the increase in height is 15. That turns out to be 15 here. Itni height up increase kar gaya. Work done against resistance, we're given that's 10,000 joules. We just input that value here directly, and that's going to give us the work done by the driving force, which is the crane. Crane kitna work kar rahi hai?
work done by crane, वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा. Let's evaluate the 6,000 into 15 plus 10,000, and that gives me 100,000. So this is 100,000 joules. That's the work done by the driving force, work done by the crane. That's 100,000 joules. Walaikum assalam, Adil. Let's look at the next part. Now it says, given that the average power exerted by the crane is 12.5 kilowatts. Now be careful about the units. This is 12,500 watts. So आपको इसको standard unit में use करना होता है. Find the total time for which the block is in motion. Now remember, जब भी आपके पास ये work energy power वाले questions के अंदर time आता है, time का हमारे पास एक ही formula होता है, and that's basically power equals work done over time, है ना? Power आपके पास है, power is 12,500. This is the power exerted by the crane. Do we also know the work done by the crane? We know that. हमने पिछले बार में वही तो find किया, that was 100,000. So power is 12,500. That equals work done, that's 100,000 divided by the time taken, and that's going to give us the value of T here. यहाँ से आपके पास T आ जाएगा. T equals 100,000 over 12,500. You can see what that turns out to be. It should be 8, I think. Yeah, so T की value आपके पास यहाँ से 8 आ जाएगी. ठीक है? So pretty simple. Simple application of the formula. These are the first two parts. Yeah, so that's it on the first question. Pretty straightforward. Let's look at the next one. A particle P is projected vertically upwards from horizontal ground with speed u. P reaches a maximum height of 20 meters above the ground. Okay, so it's a particle that's starting from, and that's projected from horizontal ground. Ground से उसको project किया. Let's say this is the particle P. Now it's projected upwards. At what speed? At u meters per second. Okay. Now it reaches a maximum height of 20 meters. So इसकी जो maximum height है, that it reaches, that is 20 meters. Maximum height पे क्या होता है? Velocity 0 हो जाती है. So we can say final velocity is 0. If we take the upwards direction as positive, तो आपकी acceleration क्या होगी? Acceleration is going to be -10. So we've got some values. We've got the initial velocity, that is u. We've got the final velocity. Final velocity is 0. U हमें find करना है. U हमें figure out करना है. U is the unknown. Acceleration, what's that? Since we're taking upwards direction as positive, acceleration is going to be -10 because gravity आपके नीचे वाली side पे लग रही होती है. Acceleration की value -10 हो जाएगी. And then the distance traveled is 20 meters to reach the maximum height. Okay. Now what connects these four things? 2as equals v square minus 4 means v square minus u square. वो यहाँ पे equation use कर लेते हैं. 2as equals v square minus u square. Let's use that and see what that gives us. Okay. 2 into -10. I think this is better. That's very light. I'm going to doबारा से change कर लूं. Okay, 2 into -10 into s, that is 20, equals v square, which is 0, square minus u square, that's unknown. वो आपको figure out करना है, and that's going to give us the value of u. या देख लें क्या आता है. We get minus u square equals -400. और u की value आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी? I think it's going to turn out to be 20. 400 का square root 20 होएगा, और minus cancel हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 20 meters per second. ठीक है? Makes sense? Let's move on to the next part. Now it says, find the total time for which P is at least 15 meters above the ground. Now, how do we think about that? For which P is at least 15 meters above the ground. Time find करना है आपको, ठीक है? इसने क्या at least 15 meters ऊपर होना चाहिए. Now, let's think about this. Total उसका आपको नजर आ रहा है, maximum height कितनी है? 20 meters. Maximum height 20 पे जा रहा है. What we can do is we can consider this journey.
You can say कि अच्छा अगर वो ground से start करता है, now we know the speed of projection. It was projected at 20 meters per second, so it's going upwards like this, and then at some point it's going to reach this point जहाँ पे आपकी height कितनी हो जाएगी? It's going to become 15 meters. किसी point पे जाके height क्या हो जाएगी? It's going to be 15 meters. और फिर ये उसके ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और फिर वापस आएगा और फिर नीचे ग्राउंड पे जाके हिट करेगा वापस. What we are interested in is we are interested in this time interval. ये टाइम हमें चाहिए 15 से ऊपर वो कब रहता है. ठीक है. Now there could be multiple ways of thinking about this. One idea could be, since you know the starting speed, starting velocity, आपको पता है initial जिस velocity पे उसको project किया है, that is 20 meters per second. You also know the acceleration. अगर हम upwards direction को positive ले रहे हैं तो acceleration -10 होगी. So we know these two things for sure. We know initial velocity is 20. We know that acceleration is -10. And what we can do now is we can figure out कि 15 meters जो height होती है उस point के ऊपर आपका time कितना है. ठीक है. जब 15 meters height होती है उस point के ऊपर आपका time कितना है. आपके पास दो values आ जानी चाहिए time की. क्योंकि एक दफा ऊपर जाते हुए 15 meters होगा, एक दफा नीचे आते हुए 15 meters होगा. You'll get two values of t, उनको separate कर देंगे, उससे हमारे पास result आ जाएगा. Now let's think about this. हमें क्या करना है? 15 meters time 15 meters distance के ऊपर displacement के ऊपर आपको time t find करना. ठीक है. Now we think about which equation connects these four things. U, A, S, and T. Again, we've got S equals UT plus half AT square. Yeah, so that works. S equals UT plus half AT square. That's going to work here. S की value 15. U is 20 into T plus half into A, which is -10 into T square. ये आपके पास equation आ गई. Just need to solve this equation. 15 equals 20T minus 5T square, and that's going to give you 5T square minus 20T plus 15 equals 0. And that's T square minus 4T plus 3 equals 0. Now remember, in mechanics as well, they expect you to show the working for solving this equation. Okay? Sometimes they expect you to show this working, sometimes they let you get away with this. तो आपको नहीं पता कहाँ पे वो इसके मार्क्स काट लेंगे, कहाँ पे देंगे. तो you should always show the working for solving quadratic equations here. आपको हमेशा ये working show करनी चाहिए मैकेनिक्स के पेपर में भी. ठीक है. वर्किंग आपको क्या शो करनी है, या तो उसके फैक्टर्स शो कर देंगे या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करके देख लेंगे. नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस कैन बी फैक्टराइज्ड. We can say this is t square minus 3t minus t plus 3 equals 0. We get two factors from that, t minus 3 and t minus 1. T equals 3 and t equals 1. Now, what is this telling us? It's basically telling us there are two values of t, two time instances at which this displacement is 15 meters. So basically, एक दफा ऊपर जाते हुए time आपका 1 होएगा, ये वैल्यू आ रही है. जब वापस आ रहा होगा वो पार्टिकल, उस पॉइंट पे टाइम आपका 3 होगा. What do we want? We want the time for which the particle remains above 15 meters. ये येलो पार्ट में आपका कितना टाइम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो आपके पास टाइम आ जाएगा. उस टाइम में वो उस हाइट से ऊपर है. This turns out to be 3 minus 1, and that is 2 seconds. ठीक है. That's what you wanted here. ये आपके पास टाइम आ गया. Okay, let's move on. So this is the complete working here. Let's move on to the next one. Yeah, so that was question number 2. Again, pretty standard, कोई नई चीज नहीं थी इसके अंदर. अच्छा, a car of mass m kilograms is towing a trailer of mass 300 kilograms down a straight hill inclined at 3 degrees to the horizontal at a constant speed. There are resistance forces on the car and on the trailer, and the total work done against resistance forces in a distance of 50 meters is 40,000 joules. Again, they're talking about work done against resistance. They're talking about work done against resistance. Okay. तो आप यहाँ पे energy method use कर सकते हो if you want. Let's draw
a rough figure. अच्छा पहले आगे देख लें. Engine of the car is doing no work. So that's important. There's no driving force. There's no driving force. And the tow bar is light and rigid. अच्छा ये देखें, अक्सर आप देखेंगे recent papers में ना, अक्सर ये पहले होता था light inextensible string होती थी. Now they often have tow bars or strings that are rigid. इसमें you have to be careful. String में हम क्या कहते थे, जो normal string होती थी उसमें tension हमेशा, अगर आपके पास ये block है let's say और इस पे कोई string attached है, तो हम कहते थे tension हमेशा block से away लगती थी, है ना? That's what we used to say normally when we had light and extensible string. जब ये rigid strings आ जाती है ना, या rigid tow bar इस तरह की कोई चीज आ जाती है, this could actually be in either direction. क्योंकि rigid objects push भी कर सकते हैं. Strings हमेशा pull करती थी ना, rigid objects pull भी कर सकते हैं, push भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपकी direction ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों possible है. तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, you're going to use exactly the same thing as before. आप उसी तरह से directions दिया करेंगे जो आप पहले लेते थे, away from the object. लेकिन you just have to be mindful of the fact कि it is possible कि end पे आपके पास tension की value negative आ जाए. ये हो जाता है, इस तरह possible होता है. I've seen that in one person at least in past papers. I don't remember exactly वो कौन सा paper था, but it's one of the recent ones, 2020 के बाद वाला की paper है. उसमें आपकी tension की value negative आ सकती है. Tension की value negative आ सकती है. ठीक है, so just know that. उसको हम thrust कहते हैं. Basically जब tension negative आ जाती है उसको हम thrust कहते हैं. Okay. ये string में भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर लिखा होगा it's a rigid string. Right, rigid है, उस केस में आपकी टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, वरना नहीं आती. Okay, अच्छा, now let's get back to this question. It says find the value of m given all of this information. हम क्या करेंगे? Let's draw a rough figure to try to understand the situation better. It's an inclined plane, so it may look something like this, and the angle is 3 degrees. Angle आपके पास यहाँ पे 3 degrees. ठीक है. Okay, car is towing the trailer and they're going down the hill. So basically car left पे होगी. ठीक है. What I'm going to do is I'm actually going to make it a bit larger. So we have more space. Okay, so let's say this is a car. This is the car, and behind that is the trailer, and they are connected by that tow bar. Okay, now let's look at the forces that are acting on both of those objects. In fact, यहाँ पे energy है, तो energy method भी use कर सकते हैं. So हमें बस उसमें height चाहिए होगी, distance वो हम देख लेंगे. तो यहाँ पे हम actually energy method is going to be more efficient as compared to the forces method, but you can use either of them actually here. हम इसका use कर लेते हैं. हमारे पास क्या क्या information है? We know कि आपका work done against resistance कितना है. Let's write down the energy principle first. Work done by the driving force, that equals change in kinetic energy plus the change in potential energy plus work done against resistance. Now let's see what information we've got here. हमें पता है कि resistance कितनी है, total work done against resistance. What's that? That is 40,000 joules. Okay, so that's 40,000 joules work done against resistance. ये हमें पता चल गया. Work done by the driving force. It says the engine of the car is doing no work, so there's no work done by driving force. Left side पे 0 आ गया. Change in kinetic energy. Do we know that? उसने यहाँ पे क्या लिखा है? उसने कहा constant speed है. It's constant speed. If the speed is constant, that means that the change in kinetic energy is going to be 0 because there's no change in velocity or speed. ये भी 0 हो गया. मसला सिर्फ आ गया potential energy का change. ठीक है? Now what is this going to be? Let's figure that out. How much have they moved? They've moved 50 meters. Now I'm going to draw that separately. Actually, it's going to be simpler. 50 meters नीचे move कर गए. So basically, inclined plane पे distance कितना move किया उन्होंने? 50 meters उन्होंने move किया. So this is 50. What's the angle? The angle is 3 degrees.
हाइट कितनी हो जाएगी? इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन फिगर दिस आउट. ये h आप फाइंड कर लें. What we can do for this is perpendicular. H is perpendicular, 50 is hypotenuse. We say h over 50 should equal sine 3 degrees. यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी कितनी हाइट आपकी डिक्रीज हुई है, कितनी हाइट आपकी डिक्रीज हुई है. ठीक है. अच्छा, now let's see what that turns out to be. 50 into sine of 3. You have to be careful. आपका कैलकुलेटर throughout mechanics radians degrees में होना चाहिए. Radians में आपको कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे. So I'm just going to change my calculator mode. This is 50 sine 3. This turns out to be 2.617. ठीक है, ये height आ गई at least to 4 significant figures. Now you just input those values here. Now you've got to be careful about the sign that you're using. Potential energy decrease हो रही है, वो नीचे को move कर रहे हैं. They're moving downwards. Okay? या तो आप h को negative लिख देंगे, या बस आप यहाँ पे बाहर negative लगा दें, because the change in potential energy should be negative. What's the mass? We don't know. M into g, that's 10. Change in height, that is 2.617. Just solve this and you'll get the value of m from this. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है? This turns out to be 26.17 m equals 40,000, and m equals 40,000 divided by this, and that gives me 40,000. अच्छा, so we're missing something there. We're missing something there. यहाँ पे एक और भी हमारे पास ट्रेलर का भी mass था. Mass of car was m. Mass of the trailer was 300. We should add that here as well. हमें ये भी add करना चाहिए यहाँ पे. We missed that trailer there. दोनों के masses अलग-अलग हैं. It's not the total mass. It's only the mass. M is only the mass of the car. तो ये mass यहाँ पे क्या लेंगे? It should be m plus 300. Okay, this should be m plus 300. Now let me actually just calculate this again. ये आपके पास क्या आता है? It's going to be 26.17 into m plus 300. That equals 40,000. 26.17 m plus 300 into 26.17. That is 7851 equals 40,000. अब इसको अब साइड पे ले जाएंगे. 40,000 में से वो माइनस कर दें, divided by 26.17, and that's given me 1228 kilograms. That's what I'm getting, 1228 kilograms. आगे decimals में भी कुछ आ रहा है. You don't have to necessarily write that. This is your mass. Okay, since it's not exact, if you wanted to round it off, you could do that. Although you can just leave it like this as well, and that's going to be acceptable. अगर आप round off करना चाहो इसको, it would be 1230 kilograms. That's the value of m that we've got here. Okay. Fazan, let's discuss that at the end, towards the end. That will be easier. So you could use the forces method here as well, and that will work. अगर आपने वो यूज किया, that's also fine. आप इसमें forces calculate कर लें, और उसमें फिर आप न्यूटन्स सेकंड लॉ RF equals ma लगा दें. constant speed है तो acceleration की value 0 हो जाएगी. You could do it that way as well, and that's perfectly okay. That will also work. ठीक है. अच्छा, good. Let's move on to the next part. It says the resistance force on the trailer is 200 Newton. Resistance is 200 Newton. उसने आपको resistance की value बता दी है. Okay. Find the tension in the tow bar between the car and the trailer. अब उसने tension की value मांगी, आपसे force मांगी उसने. ठीक है. So now in this part, it's going to be easier to use the forces method. ठीक है. So हम यहाँ पे वो कर लेते हैं. I'm going to just draw that figure here again. In fact, हमें यहाँ पे वही वाली figure यहाँ पे copy कर लेते हैं. Okay. So this is what we have. We've got the car and the trailer. This is the trailer. And this is the car.
Now what forces do we have acting on them? अगर हम उसने आपको बताया resistance force on the trailer is 200 न्यूटन, तो अगर ट्रेलर का सोचें तो ट्रेलर के ऊपर एक तो फोर्स रेजिस्टेंस लग रही है, that's acting in this direction, that is 200 न्यूटन. Now remember, they are moving downwards, they're moving down the slope, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगी? उनको अपोज कर रही होगी. That's one force. Then we have their weights. कार का वेट कितना आ गया? हमने उसकी अभी मास, उसका मास निकाला है 1230 kilograms approximately. That's going to give us 12,300 Newton. That's the weight of that. It's better to use exact actually. That was 12,280 Newton. That's the weight of the car. We've got the weight of the trailer. Uska mass kitna diya hua tha? It was 300 kilograms. So that will be 3,000 Newton. Okay. अच्छा, ये हमारे पास दोनों के weights आ गए. What else do we have? हमें क्योंकि along the surface forces देखनी है, और यहाँ पे friction की कहीं पे कोई बात नहीं हो रही है. We don't really care about reaction. हमें reaction तो नहीं चाहिए, right? We don't have the coefficient of friction, और हमें वो F equals mu r यहाँ पे नहीं use करना, तो हमें reaction represent करने की जरूरत नहीं है. हमें perpendicular forces नहीं चाहिए. We are only concerned about forces that are acting along the plane. हमें सिर्फ वही वाली forces चाहिए, ठीक है? अच्छा, कार के ऊपर अब ट्रेलर के ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही है? There's a forward force, that is the tension in the tow bar. ये आपके पास tension लग रही है. Anything else? These are all the forces that are acting on the trailer. Now think about the car. कार के ऊपर कोई forward force लग रही है? कार के ऊपर there's no forward force. मैं आपको बताया हुआ engine of the car is doing no work. Okay, so there's no forward force, but there's tension that's acting backwards on the car as well. ये आपके पास कार के ऊपर फोर्सेस लग रही है, ठीक है? कार के ऊपर तो रेजिस्टेंस है. Let's try to have a look at that. Yeah, so उसने कहा हुआ है कि total work done against resistance forces, that is 40,000 joules. तो अगर आपको वो निकालना होता कि कार के ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है, वो भी आप फिगर आउट कर सकते थे, ठीक है? अच्छा, लेट्स सी ट्रेलर के ऊपर अगर ऊपर हम वो यूज कर लें न्यूटन सेकंड लॉ, we might actually just get the result from there directly. It's only 2 marks. हो सकता है हमें उसकी जरूरत ही ना पड़े. Let's use this on the trailer. ट्रेलर के ऊपर देखते हैं forward forces कौन सी हैं और backward forces कौन सी हैं. We use RF equals ma, resultant force equals mass into acceleration. What's the forward force here? Forward force is tension. What about the backward forces? Tension के अलावा एक और भी force होगी. यहाँ पे हम इसको resolve करना पड़ेगा. 3000 न्यूटन को इसको resolve करते हैं. ये 3 degrees है, remember? So इसके components, एक तो यहाँ पे perpendicular component बनेगा और एक component यहाँ पे along the plane बनेगा. That's going to be in this direction. वो कितना हो जाएगा? This is 3 degrees. So this component is 3000 sine 3 degrees. ठीक है? Forward force आपके पास एक और आ गई यहाँ पे, that is 3000 into sine of 3 degrees. What's the backward force? We know that is 200 Newton. That's acting backwards. Minus 200 equals mass of the trailer. What's the mass of the trailer? That is 300 kilograms. So we have 300 kilograms into acceleration. Now remember, यहाँ भी तो constant speed पे move कर रहे हैं, acceleration 0 हो जाएगी. Right side पे हमारे पास 0 ही आ गया basically. इसको directly आप 0 लिख सकते थे if you wanted. What do we have on the left side? We only have one unknown now. That's t. T की value हम यहाँ से figure out कर लेंगे. ये देख लें क्या आता है. 3000 into sine of 3. 3000 into sine of 3. That's 157.00 minus 200. यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा. That's 200 minus 157, and that turns out to be 43.0 Newton. That's your tension. ये हमें figure out करना था second part में, ठीक है? Yeah, so you're right. अगर हम first part में भी forces कर लेते हैं यहाँ पे, तो second part में इतनी ज़्यादा खास काम नहीं करना पड़ता यहाँ पे. Yeah, you're right about that. Yeah, so that's the only two. These are the only 2 parts that we have here. So ये पहले तीनों questions बहुत ही छोटे-छोटे थे. We had 4 marks in the first question,
5 on the next, and then this was also 5. Okay, let's move on to the next one. The total mass of a cyclist and her bicycle is 70 kilograms. The cyclist is riding with constant power of 180 watts. उसकी power दी हुई है, दोबारा से आपके पास वही work energy लग रहा है, कुछ आ रहा है उससे related. Now it's going up the straight hill at an angle alpha to the horizontal. Now let's just start making a rough diagram. So we have this horizontal, and this is the straight hill. The angle is alpha. अच्छा, sin alpha उसने दिया हुआ है. At an instant when the cyclist's speed is 6 meters per second, her acceleration is minus 0.2. There's a constant resistance to motion that is of magnitude F Newton. We have to find the value of F resistance to motion. आपको वो figure out करना है. Now, again, you could have multiple methods here as well. It's going to be possible to use both energy method or the forces wala method. Both are okay. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमें क्या क्या दिया हुआ है? Do we have the distance traveled, speed दी हुई है, or what? Yeah, so we have power here. We've got power and we've got the speed. इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम एक तो ड्राइविंग फोर्स निकाल सकते हैं. अच्छा, इसमें एनर्जी नहीं दी हुई है, तो it's actually going to be better to use the forces method. क्योंकि आपको पावर और ये पावर और स्पीड यूज करके क्या हो जाएगा, आपके पास फोर्स आ जाएगी डायरेक्टली, राइट? सो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. पावर इक्वल्स ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर की वैल्यू क्या है? दैट इज 180. ड्राइविंग फोर्स वी डोंट नो. वेलोसिटी इज 6. ये उस इंस्टेंस की बात करें, एक जिस इंस्टेंस पे 6 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है, वहां पे उसकी एक्सेलरेशन माइनस 0.2 है. एक पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा, इस पे ड्राइविंग फोर्स क्या आ रही है? उस पॉइंट के ऊपर 180 over 6, और दैट गिव अस 180 divided by 6, दैट इज 30. इस इंस्टेंस के ऊपर उसकी वेलोसिटी, उसकी ड्राइविंग फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन. और उस पॉइंट के ऊपर उसने आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, ठीक है? What we can do now is we can actually use Newton's second law. यहाँ पे आपके पास mass आ गया इसका. Mass is 70 kilograms of both the cyclist and the bicycle. Mass इसका 170 kilograms है. What are the forces acting on this total mass? We've got the weight that's acting downwards, that is 700 Newton. We have reaction, but again, we don't need that. We have a friction. हमें नहीं चाहिए. उसने एक constant resistance to motion है, जिसको उसने F से represent किया है. Since they are moving upwards, ऊपर को जा रहे हैं, they're moving up the straight hill, तो resistance किस side पर होगी? It's going to be acting downwards. This is the direction of the resistance. उसको उसने F से represent किया, इसको हम F लिख देते हैं. What else do we have? We have the driving force. Driving force, हमने figure out कर ली, that is 30 Newton. Driving force turns out to be 30 Newton. And now we think about resolving the forces. This is the weight, that is 700 Newton. Again, हमें सिर्फ along the plane forces चाहिए. Perpendicular हमें reaction की जरूरत नहीं है. 700 को resolve कर लें. इसके components क्या आ जाएंगे? We'll have one component here. We don't need that again. हमें सिर्फ parallel वाला component चाहिए, ये वाला component. If this angle is alpha, this is also going to be alpha. So ये component क्या हो जाता है? 700 sin alpha. ये आपकी forces आ गई. We've got this force, and this force. What do we do now? We say resultant force equals mass into acceleration. Forward forces कौन सी है? We've only one force, that is 30. Minus the backward forces, we've got F, and also the component of the weight, that is 700 sin alpha. That equals mass of the whole object, the whole system, that is 70 into acceleration. Acceleration उस point के ऊपर उसने क्या दी हुई है? That is minus 0.2. Let's input that here. We know the value of sin alpha. Sin alpha is 0.05.
वो इसके अंदर इनपुट कर दें and you'll get the value of f from that. 700.0.05, that equals 70 into 0.2, that's minus 14 on the right side. We can just simplify this. यहाँ से हमारे पास f आ जाएगा. I'm going to evaluate that directly. 30 minus 700 into 0.05 plus 14, and that gives me 9. f की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 9 न्यूटन. ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, इसको उसने f से रिप्रेजेंट किया था. This how we can do that. We find the driving force first. Driving force अब आ गई, उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, हमने न्यूटन सेकंड अप्लाई कर दिया. Forward minus backward, that equals mass into acceleration, and that gives us the value of f here. Okay, let's move on. It says find the steady speed that the cyclist could maintain up the hill when working at this power. Now, this terminology is important. You should know about this. It says steady speed. इसका क्या मतलब होता है? Steady speed यानी कि आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी किसी पॉइंट पर जाके. स्टेडी का मतलब है आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0. ओके, स्टेडी स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी वहां पे. पावर इज द सेम, it's still the same power, but the velocity is not the same anymore. ठीक है, velocity आपकी अब वो नहीं है. We've got this relationship, power equals driving force into velocity. हमें एक value तो पता है इसके अंदर, power पता है, that is 180 watts. Power is 180 watts. Okay, we don't know what the driving force is, we don't know what the velocity is. Now for that what we do is we use if equals ma. वहां से हमारे पास ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी. हाउ? बिकॉज वी नो, ये हमारे हमने फिगर ऊपर बनाई हुई है. वी कांट यूज द सेम वैल्यूज एनीमोर बिकॉज ये सिचुएशन चेंज हो गई है. वेलोसिटी इज नॉट द सेम एज बिफोर. 6 वेलोसिटी नहीं है, अब ड्राइविंग फोर्स कुछ और होगी. वी डोंट नो व्हाट दैट इज. लेट्स कॉल दिस df. दैट्स द फॉरवर्ड फोर्स. बैकवर्ड फोर्सेस कौन सी है? वी गॉट f. उसने कहा हुआ था देयर इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन. कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन, तो रेजिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट. जो आपने फर्स्ट पार्ट में रेजिस्टेंस फाइंड किया उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर स्पीड उसकी 6 थी, रेजिस्टेंस वही रहेगी. रेजिस्टेंस किसी पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही है. सो वी स्टिल हैव कैन यूज द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 9. तो यहाँ पे 9 यूज कर ले. एंड देन we've got another backward force, that is 700 sin alpha. Since we're talking about the case when there is steady speed का मतलब acceleration 0 है, तो right side आपके पास 0 आ जाएगा, or you can say 70 times 0, that's basically 0. You're going to get the driving force from here. df minus 9 minus 700 into 0.05 equals 0. You get a value for df from here. Let's evaluate this. 9 plus 700 into 0.05, that gives me 44. So the driving force when the speed is steady, that is 44 Newton. ये value जाके वहां पे input कर दें. 180 equals 44 into V, and you're going to get the value of V from there. That's 180 divided by 44, and that turns out to be 4.091, or you can say that is 4.09 meters per second. That's the value of V that you get from this. ठीक है, ये आपको ये steady speed आ गई जो आपको चाहिए. Okay. All right. So this paper has been pretty straightforward until this point. अभी तक कुछ भी इसमें complicated नहीं आया as such. Let's move on to the next one. Again, it's a relatively straightforward question. Forces वाला question काफी आसान होता है, mostly if you know the standard method. Let's try this. 4 coplanar forces. There are 4 forces. They act at a point. The magnitudes of the forces are 10 Newton, F Newton, G Newton, and 2F Newton. आपको सारी diagram के ऊपर नजर आ रही हैं. The directions of the forces are shown here. So given that the forces are in equilibrium, okay, so we've got equilibrium, that means opposite forces आपकी equal होंगी. यहाँ पे कोई surface नहीं involved. What we can do is we can say forces acting on the right side are going to be equal to forces acting on the left side. और इसी तरह से vertical forces भी equal होंगी, upward forces are going to be equal to the downward forces. So that's what we do here. सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है? Forces को resolve करना पड़ता है. We've got some forces that are already horizontal and vertical. F horizontal है, 10 Newton vertical है. उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. We have to resolve G and 2F. Let's resolve them. G का एक component यहाँ पे लगेगा
एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, we use cos there, so that's going to be g cos 60. The component on the other side of the angle, that's going to be g sin 60. Let's think about this force, 2F Newton. One component that is going to be in this direction, the other in this direction. The component that's adjacent to the angle, we're going to have cos there, 2F cos 40. The component on the other side of the angle, we have sine there, and that is 2F sine 40. ठीक है, ये सारी forces होंगी, अब opposite forces equal होनी चाहिए. These are the horizontal forces. This force and this force, and we got some vertical forces, g sin 60, 2f sin 40, and 10. We just equate opposite forces. हम देख लें horizontal forces को equate कर दें और vertical forces को equate कर दें. Horizontal forces कौन सी? Left side पे we've got 2f into cos of 40. That should equal the forces acting towards the right side. That's basically g cos 60. So we get one relationship between f and g from here. आपको exact values तो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसको आप decimals में convert कर लें, that's okay. ये देख लें क्या आ जाता है आपके पास, 2 into cos 40. That gives me 1.5321. Make sure that you're using a lot of significant figures here. I would recommend even more than 4 ताकि आपके end पे answers सही आ रहे हो. ठीक है, इसको round off आपने नहीं करना यहाँ पे, otherwise आपके end पे answers गलत आएंगे. It happens a lot in this question. इसमें most people end up losing 1 mark at the end. क्यों? क्योंकि उनके आंसर 3 significant figures तक accurate नहीं आ रहे हो, तो 1 mark कट जाता है इस rounding off की वजह से. अगर आप यहाँ पे round off कर देंगे ज्यादा, ठीक है, तो वो नहीं करना. Cos 60 is 1/2. That's going to be 0.5 into g. ठीक है, ये एक relationship आ गया. Let's actually write down the other equation as well. Vertical forces को equate कर दें. Upward forces are 2f sin 40 plus g sin 60. That equals 10. ठीक है, let's evaluate this. 2 into sin 40. That gives me 1.2856 f plus sin 60. Sin 60 square root of 3/2 होता है. But I'm going to write that in decimals as well. बाकी सब decimal में लिखे रहे हैं. That gives me 0.8660 g, and that equals 10. ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दें, दूसरे में जाके इनपुट कर दें. So I could, for instance, make f the subject here. That gives me 0.5 divided by 1.5321, and that is 0.32635 g. I'm going to go and input this there in the other equation, and that becomes 1.2856 into 0.32635 g plus 0.866 g equals 10. Let's evaluate this. This multiplied by 1.2856 plus 0.866, 10 divided by the answer, and that's giving me the value of g, which is check. Can somebody spot any error here? F, G, 2F. That's okay. G sin 10. Okay, this looks fine until this point. You just do the calculation again, because I think I'm not getting the right result. 2 into F into cos 40. That's fine. 1.5321. That is correct. Cos 60 is 0.5. That's also correct. Okay. 0.5 divided by 1.5321, that is giving me 0.32635. That's also fine. 2 into sin 40, 1.2856 sin 60
0.8660. That's 1.2856 into 0.32635 plus 0.866 and divided by this. And that gives me this much. Are we missing anything here? Okay, so we missed a whole force there, and nobody pointed that out. हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी. Can you spot what we missed there? Can anyone spot what we missed in that? हमने एक force ही miss कर दिया यहाँ पे. You did the same. Can you see what we missed? तो forces mark करते हुए मैंने इसको highlight नहीं किया. We had this F Newton here as well. I missed that there. मैंने वहाँ पे नहीं लिखा. इसकी वजह से I was getting the wrong answers at the end. So again, it was really straightforward, this question, and I could end up losing marks because of omitting one force. Okay, मैंने carefully नहीं देखा उसको. So yeah, so we have to be careful with these situations. They can just do that all over again because वो सारी values अब change हो जाएंगी. Vertical तो खैर change नहीं होना था. Let me just do that again. Acha. So what do we have here? We've got these horizontal forces. Horizontal forces 2F cos 40, F and G cos 60. Vertical forces भी हमारे पास 3 आ रही हैं. हम क्या करेंगे? हम vertical forces और horizontal forces को equate कर देंगे. ठीक है? So let's do that here. Horizontal forces and the vertical forces. Horizontal forces हमारे पास क्या क्या आ रही हैं? Left side पे we've got one force, that is 2F cos 40. That equals F plus G cos 60. Okay, so there's this force F here as well. Vertically, we have 2F sine 40 plus G sine 60, and that equals 10. Okay, these are the forces. Now let's simplify this. Cos 40 हमारे पास क्या होता है? 2 cos 40, it gives me 1.5321 into F. That equals F plus G cos 60. Cos 60 0.5. That's 0.5 times G. And this becomes 0.5321 F equals 0.5 G. We can write F in terms of G or G in terms of F ताकि हम दूसरी equation में जाके input कर सकें. We get 0.5 divided by this, and that is 0.93969. I'm using more accuracy here because इसमें end पे अक्सर मसला होता है कि आपके answers accurate नहीं आते, तो आपने ज़्यादा significant figures use करने working में, ठीक है? End पे वरना marks कट जाते हैं. अच्छा, so I've found F in terms of G here. Let's simplify the other equation as well. 2 into sine 40. What's that? That is 1.2856 times F plus G into sine 60. That is going to be 0.866 times G equals 10. Now I can input this there. This becomes 1.2856 into 0.93969 G plus 0.866 G, and that equals 10. ठीक है, इसको simplify कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है. We'll get a value of G from here. 1.28566 into 0.93969 plus 0.866, then divided by this answer, and that's giving me 4.821 for this. G equals 4.821. I can round it off if I want, or I can just leave it like this, and that's going to be okay. अब इस value को वापस इसमें input कर दें, and we get the corresponding value of F from there. That's 0.93969 multiplied by 4.821. And we get
6.93969. This is 4.531. 4.531. This is the value of f. ये हमारे पास f और g आ गई. ठीक है? Pretty straightforward. The only thing that you have to worry about here is careless errors. That happens a lot. तो आपने कोई forces मिस नहीं करनी है और numbers की accuracy जो है वो ज़्यादा रखनी है ताकि final answer आपका सही आ रहा हो. All right? अच्छा. That was the first part of question number 5. Let's move on to the next one. इसमें इतना ज़्यादा space can be used के लिए. अच्छा. Next it says given instead that f equals 3. अब देखिए first part में कुछ और information दी हुई थी. यहाँ पे उसने कहा है वो नहीं अब applicable. Now the value of f is 3. अच्छा first part में क्या लिखा हुआ था? It said the forces are in equilibrium. Okay? अब equilibrium नहीं है. Second part में equilibrium नहीं है. ठीक है? Force F is 3. Find the value of G for which the resultant of the forces is perpendicular to the 10 Newton force. Now, what we need to do for this is we need to draw this figure again. Just give me a few seconds. I'll just copy this and paste it down there. आप इसलिए क्या कर रहे होगे एग्जाम में? आप ये जो फिगर के ऊपर सारी एनोटेशन कर रहे हो, you will be doing this using a pencil. ताकि आप एक पार्ट जब कर लें, आप पिछले पार्ट की वर्किंग उसमें से इरेज कर दें और आप उसको आगे सेकंड पार्ट में यूज कर लें. अच्छा, let me write that down there. Okay, so this is the figure that we have. अब उसने क्या कहा, f की वैल्यू उसने बता दी. उसने कहा f की वैल्यू 3 न्यूटन. ठीक है, और उसने बताया है the resultant is perpendicular to the 10 Newton force. अब perpendicular to 10 Newton force का क्या मतलब है? It's either in this direction towards the right or towards the left. ये दोनों डायरेक्शंस हो सकती हैं. अब देखें, अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है सिर्फ रिजल्टेंट, उसका क्या मतलब है? रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी 0. वर्टिकल रिजल्टेंट जो है वो तो 0 होगा, राइट? बिकॉज हॉरिजॉन्टल सिर्फ रिजल्टेंट है, तो वर्टिकल रिजल्टेंट तो 0 होगा. ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, तो रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट अगर होता वो 0 होता. तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं जस्ट लाइक बिफोर. हमारे पास इनफैक्ट फोर्सेस तो ऑलरेडी रिजॉल्व थी पहले. I'm just going to write them here again. This is g cos 60. This was g sin 60. This is g cos 60. And then we have this 2f sin 40. We have this 2f cos 40. ठीक है, ये हमारे पास forces को हमने resolve कर लिया. Now let's write down, let's highlight the forces that we've got. Horizontal forces ये हैं सारी. Vertical forces कौन सी हैं? We've got these vertical forces. अब देखिए, क्योंकि vertical component 0 होना चाहिए, vertical component 0 होना चाहिए, vertical resultant का vertical component, right? That should be 0. इसका मतलब यह है कि ये वाली फोर्स जो अपवर्ड्स लग रही है, जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर स्टिल. ये अभी भी इक्वल होनी चाहिए दोनों. ठीक है, ये अभी भी इक्वल होनी चाहिए. तो वर्टिकल फोर्सेस अभी भी इक्वल होंगी. हम क्या करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं. अब ये वर्टिकल फोर्सेस को हमने देखें ऊपर इक्वेट किया था. वी विल जस्ट यूज दैट हियर. वर्टिकल फोर्सेस को जब हमने इक्वेट किया था, हमारे पास ये आ गया था, है ना? I'm just going to write that here again. Okay, forces तो वही हैं, सिर्फ f की वैल्यू उसने specific input कर दिया. Let me use that here. That is 1.2856 times f. Or let me just do it again. एक ही बात है, दोबारा से लिख लेते हैं. f की वैल्यू उसने बता दिया. So it's going to be 2 into 3 into sine of 40 plus g sine of 60. That equals 10. वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि आपके रिजल्टेंट 0 होना चाहिए वर्टिकली,
this turns out to be an equation that we've got. ठीक है, अच्छा अब क्या करें, इससे हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी. Let's evaluate this and see what we get. जब इसकी एक स्टेप और शो कर दें तो it's better. sin 40 क्या आता है यहाँ पे, ये पूरा evaluate कर लेते हैं. In fact 6 sin 40, that is 3.8567 plus 0.5, no, it's not 0.5, it's 0.866 times g, that equals 10. यहाँ से आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी, वही आपको फाइंड करनी थी, उसने g की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था. ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10 minus the answer divided by 0.866, and this gives me 7.094. And that is 7.09 to 3 significant figures. ये आपके पास g आ गया. ठीक है, अगर उसने आपसे रिजल्टेंट पूछा होता तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को यूज करके रिजल्टेंट निकाल सकते हो. ठीक है, so you could do that as well. All right, that was this part B, and that's it. That was question number 5. Okay. Again, not very difficult, pretty straightforward. बस आपने careless errors avoid करने हैं, and the rest should be okay. Rocky, I leave my number here that I have there on the channel as well if you want to connect. Let me just, yeah, so 0315 322 FAB and 6K. Yeah, you can connect to me on this number. Don't expect quick responses. I generally take a lot of time to respond. So it depends on what your query is. I don't teach privately, by the way, so that's not an option. Just to let you know, I don't teach in the evenings. If you have any questions, any general guidance that you need, you can connect me there. I will hopefully try to respond soon. Okay. Achha. Okay, so that was question number 5, part B. Achha. Question number 6, let's have a look at this. A cyclist starts from rest at a fixed point O and moves in a straight line. So it's starting from rest and it's moving in a straight line. Before coming to rest k seconds later. So it comes to rest k seconds later. The acceleration of the cyclist at time t seconds after leaving O is a meters per second square, which where a equals this thing. इसने ये बता दिया आपको. ठीक है. Find the value of k. अच्छा. A equals 2t raised to power -1/2 minus 3/5 t raised to power 1/2. ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अच्छा, हमें k फाइंड करना है. हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, उसने बताया कि इट कम्स टू रेस्ट k सेकंड्स लेटर. तो बेसिकली टाइम फाइंड करना है व्हेन द वेलोसिटी इज 0. टाइम फाइंड करना है व्हेन द वेलोसिटी इज 0. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट कर देते हो तो उससे आपको वेलोसिटी मिल जाती है. So let's integrate this. We get v equals 2t raised to power 1/2 divided by 1/2. Power increase कर दी by 1 and we divide by 1/2 minus 3/5 increase the power by 1 divided by 3/2. ये आपने integrate कर दिया. Now remember, whenever we integrate, we have a plus c as well. ठीक है, अगर लिमिट्स नहीं इनपुट करे तो प्लस सी तो डालते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस सी भी डाल दिया. लेट्स सिंप्लीफाई दिस एंड सी व्हाट वी गेट. वी गेट v equals 4t raised to power 1/2
minus this 3 and this 3 get cancelled, 2 ऊपर चला जाएगा and becomes 2/5 t raised to power 3/2 plus c. c भी आ रहा है आपके पास, क्योंकि लिमिट्स तो नहीं डाल रहे हम यहाँ पे. अब c की वैल्यू कैसे फाइंड करें? इस केस में it's straightforward. Why? Because it says it starts from rest. Since it starts from rest, that means when time equals 0, तो velocity 0 है. आपको एक point given है. तो when t equals 0, velocity equals 0, उससे आपके पास क्या आ गया? The value of c will also turn out to be 0. c की वैल्यू के पास 0 आ गई. So now this is the velocity function that we've got. 4t raised to power 1/2 minus 2/5 into t raised to power 3/2. This is the velocity function. अब आपको क्या करना है? आपको time find करना है when the velocity is 0. Time find करना है when the velocity is 0. So we put the velocity equal to 0. 0 equals 4t raised to power 1/2 minus 2/5 into t raised to power 3/2. Equate कर दिया 0 के साथ. Now we take t raised to power 1/2 common. What are we left with inside? We've got 4 minus 2/5 times t equals 0. And this gives us either t equals 0, t raised to power 1/2 equals 0, or 4 minus 2/5 t equals 0. First से आपके पास t की वैल्यू 0 आ गई. That we already know because हमें पता है वो start 0 से कर रहा है. t equals 0 आ गया. Second equation से हमारे पास क्या आ गई? उससे भी time की वैल्यू आ जाएगी. Let's see what that turns out to be. 2 and 4 into 5/2, that's basically 10. ये आपके पास time की वैल्यू आ गई 10. That's what we were looking for. Time जब वो दोबारा उसकी velocity 0 होती है, वो time कितना था उसने k से represent किया हुआ. ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? k की वैल्यू हम लिखेंगे k की वैल्यू is 10. That's the value that we were looking for there. K equals 10. All right. Now it says find the maximum speed of the cyclist. Maximum speed of the cyclist. How do we think about that? Maximum speed. Speed ki maximum value. We already have the velocity function, remember? We know the velocity function. That's 4t raised to power 1/2 minus 2/5 t raised to power 3/2. इस velocity की हमें maximum value find करनी है. Remember differentiation? Maximum value कैसे find करते हैं किसी function की? उसका derivative लेते हैं, उसको 0 से equate कर देते हैं. Velocity का derivative क्या होता है? Velocity का derivative वैसे acceleration होता है. तो आप simply क्या कर सकते हैं? Acceleration को 0 से equate कर दें. या आप कह दें velocity का derivative equal to 0 because it's basically coming from differentiation. Velocity का derivative जो होगा वो 0 से equate होगा. Velocity का derivative क्या होता है? वो acceleration होती है. तो आप acceleration को 0 से equate कर देंगे essentially. ठीक है? तो हमें पता है कि acceleration क्या है? Acceleration is 2t raised to power minus 1/2 minus 3/5 into t raised to power 1/2. This is the derivative of the velocity. We put this equal to 0. And that's going to give us the value for time. Time आ जाएगी, उसको वापस हम यहाँ पे speed वाले formula में input कर देंगे, corresponding speed आ जाएगी उस time के ऊपर. अच्छा, 0 equals 2 over t raised to power 1/2 minus 3/5 into t raised to power 1/2. We multiply by 5t raised to power 1/2 to get rid of the fraction. 5 से multiply कर दिया यहाँ पे, it becomes 10. उधर t raised to power 1/2 से multiply किया, that becomes 3t equals 0. The value of t that we get from this is 10/3, which is 3.3333. Let's just write it like this. Time की value 3 आ गई. We put this back into the velocity function, and that's going to give us 4 into 10/3 raised to power 1/2 minus 2/5 into 10/3 raised to power 3/2, and that's going to give us the value for velocity. ये देख लें क्या आ जाता है. 4 into 10 divided by 3 raised to power 0.5 minus 2 divided by 5 into 10 divided by 3 whole raised to power 1.5. Okay. Raised to power 1.5
Yeah, so this is giving me 4.8686. So that is 4.869. I can write all of this if I want, or I can round it off to 4.87 meters per second. That's the velocity that we have. All right. Okay. ये आपके velocity find करनी थी, हमने कर ली. ठीक है. Rocky, you can message me on that number as well. I do check that. But generally, whichever number you contact me on, I end up taking a lot of time because बहुत सारे messages आ रहे होते हैं. So it takes time to get back to everyone. Okay, you can message me here, and I will eventually get back to you, inshallah. So it depends on the type of question you have. I might respond quicker or later, depending on the kind of query that you have. Okay, Achha. So that's the value of velocity that we've got. Let's move on to the next one. Now we need to find an expression for the displacement from O in terms of t. Hence, find the total distance traveled by the cyclist from the time at which she reaches her maximum speed until she comes to rest. Fazan, you get responses very quickly. आपको फौरन मिल जाता है. Find an expression for the displacement from O in terms of t. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन कैसे आएगा? आपके पास वेलोसिटी फंक्शन है. वेलोसिटी कहाँ की? ऊपर थी. v equals 4t raised to power 1/2 minus 2/5 into t raised to power 3/2. ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी फंक्शन. तो आपको क्या करना है? आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा to find the displacement. Let's integrate this. S क्या आ गया? That's 4t raised to power 3/2 divided by 3/2 minus 2/5 into t raised to power 5/2 divided by 5/2. Let's simplify this. यहाँ पे ये बन जाएगा 8. Remember plus c as well, so we have a plus c as well. यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन मांगा हमसे. डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन मांगे. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी डालना जरूरी है. फिर हम देखेंगे सी की वैल्यू क्या आती है. उसके बाद वो देखते हैं कि पॉइंट दिया होगा 8t raised to power 3/2 divided by 3 minus 2/5 और ये 2 पर चला जाएगा. It becomes 4/25 into t raised to power 5/2 plus c. Now think about this. उसने क्या दिया हुआ यहाँ पे? उसने आपको बताया है कि the cyclist starts from rest at the point O. तो O से ही स्टार्ट कर रहा है. और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पूछे हुई है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O. तो बेसिकली स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो 0 है, राइट? सो यू नो when t equals 0, s equals 0, जब ये इसके अंदर इनपुट करेंगे दोनों, आपके पास c की वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है, so c equals 0 here as well. And we've got the displacement function, that is 8t raised to power 3/2 divided by 3 minus 4/25 into t raised to power 5/2. c की वैल्यू 0 आ गई. अच्छा, अब देखें उसने क्या पूछा. उसने कहा hence find the total distance traveled by the cyclist from the time at which she reaches her maximum speed until she comes to rest. Okay, so start कहाँ से करना है? From the point she reaches her maximum speed. What was that time? We've got this time here. इस point पे वो maximum speed पे पहुंची थी 10/3 के ऊपर. And when did she come to rest again? First part में वो find किया था 10 seconds के ऊपर she came to rest again. So 10/3 से लेकर 10 आप limits input कर दें, you'll get your result from that. ठीक है, let's input the limits. यहाँ पे limits डाल दें. What are the limits now? We've got 10/3 to 10. ये limits input कर देंगे, आपको displacement आ जाएगी जो उसने पूछी है. 8/3 into 10 raised to power 3/2 minus 4/25 into 10 raised to power 5/2. This is what you get when you input 10. यहाँ पे input करके दिखाना है जरूर. इसको इसी working दिखानी जरूरी होती है. ठीक है, आपको show करना है.
इनपुट करके, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। And then you have 8/3 into 10/3 whole raised to power 3/2 minus 4/25 into 10/3 whole raised to power 5/2. You can just evaluate this and that's going to give you the result. ये देख लें क्या आता है आपके पास. I would recommend you to you evaluate one bracket at a time. That's going to reduce your careless errors. 8 divided by 3 into 10 raised to power 1.5 minus 4 divided by 25 into 10 raised to power 2.5. The first bracket is giving me 33.73. That's the first bracket. Again, at least 4 significant figures use करने हैं अभी आपने working में. Subtract from that what you get from the second bracket. Second bracket में इसको replace कर देता हूँ 10 की जगह पे. We have 10 divided by 3. Here also we've got 10 divided by 3. And that's giving me 12.98. 33.73 minus the answer, we get 20.75 from this. 20.747. If you want to round it off, it's going to be 20.7 meters. That's the distance traveled from the point that the cyclist reached her maximum speed until the point she comes to rest. ठीक है, ये आपको figure out करना था यहाँ पे. ठीक है, ये आपके पास distance आ गया. That was question number 6, and yeah, that's it in question number 6. Let's move on to the next one. Abhi tak bhi, I would say it was an extremely easy paper. This is the last one. Let's see if this is slightly trickier. It should be, because पूरा paper तो आसान नहीं होना चाहिए, होता नहीं है. Let's have a look at this. A bead A of mass 0.1 kilograms is threaded on a long, straight, rigid wire. Again, this is important. Rigid hai. Be prepared for the possibility कि end पे हो सकता है tension negative आ जाए, उससे confuse नहीं होना. That is a possibility. Okay. Which is inclined at sine inverse of 725 to the horizontal. अच्छा, इसमें खैर वो tension वाले नहीं है, it's just threaded on that. So yeah, so there's no tension here as such. It's like it's acting like a surface here. जो rigid wire है आपके पास. Angle is sine inverse of 7/25. यहाँ पे इसको theta लिख देते हैं. Mass of the bead is A, is 0.1 kilogram. Let's say this is the bead that's threaded on that wire. Iska mass hai kuch. So this is 1 Newton. 0.1 kilograms is mass. Weight is 1 Newton. A is released from rest and moves down the wire. Okay, so it's moving down the wire now. The coefficient of friction between A and the wire is mu. Okay, A or Y के दरम्यान में coefficient of friction mu है. When A has traveled 0.45 meters down the wire, its speed is 0.6 meters per second. Okay, so when A has moved 0.45 meters down the wire, so let's say वो यहाँ पर आ गया, distance कितना है? That is 0.45 meters. और वहां पे जाके उसकी स्पीड कितनी हो गई है? 0.6 meters per second. Start कहाँ से किया था उसने? Started from rest. It was released from rest. Start rest से किया था. Okay, so started from rest. हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? उसकी acceleration find कर सकते हैं. Then we can use RF equals MA to find the forces. Forces और acceleration को क्या चीज connect करती है? Resultant force equals mass into acceleration. We've got these speeds and distances. हम इनसे क्या करते हैं? Let's write them down here first. U equals 0. Initial speed 0 है. नीचे को move कर रहे हैं, right? तो नीचे वाली side positive ले रहे हैं. Final speed क्या है? नीचे पहुंच के? That is 0.6. What's the distance traveled? That is 0.45. What we can do is we can find acceleration from here. Acceleration कैसे आएगी? Which equation connects them? 2s equals v square minus u square. We can use that.
we say 2as equals v square minus u square. 2 into a into 0.45, that equals v square 0.6 squared minus 0 squared. And that's going to give you the value of a. Let's figure this out. 0.36 divided by 0.9, that gives me 0.4. Acceleration की value मेरे पास आ गई 0.4 meters per second square. अच्छा, acceleration आ गई. अब हम forces देख लेते हैं. Forces क्या क्या इसके ऊपर act कर रही हैं? We have 1 Newton acting downwards like this. We've got उसने mu की बात की है, तो of course उसने यहाँ पे बताया तो नहीं है कि wire आपकी जो है वो rough है, लेकिन जब mu की बात हो रही है तो of course there's going to be friction. Since it's moving down the plane, down the wire, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रही होगी, इस डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है, जब फ्रिक्शन की बात हो रही है तो अब और क्या चीज रेलेवेंट होगी? रिएक्शन भी यहाँ पे रेलेवेंट है. वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट हियर एज वेल. आई एम गोइंग टू रेज व्हाट आई डिड फॉर द स्पीड एंड डिस्टेंसेस. वो यहाँ पे इरेज कर रहा हूं मैं, एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस नाउ. वी गॉट दिस रिएक्शन and that's it. These are all the forces that are acting. वेट को रिजॉल्व कर लें. वेट का कंपोनेंट रिमेंबर अलोंग द प्लेन हमेशा क्या होता है? वेट इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ द प्लेन, वेट इनटू साइन थीटा. यू वांट टू थिंक अबाउट दिस, आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. इफ दैट एंगल इज थीटा, जो उसने वहां पे लिखा हुआ है, दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा. सो जो इस साइड पे कंपोनेंट लगेगा, दैट्स गोइंग टू बी 1 इनटू साइन ऑफ थीटा. दूसरी साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 1 इनटू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये आपने रिजॉल्व कर लिया. What do we do now? We look at forces that are perpendicular to the surface and parallel to the surface. Perpendicular forces तो equal होंगे because आपकी movement तो perpendicular नहीं है. Perpendicular forces are going to be equal. R is going to be equal to cos theta. ठीक है, R और cos theta की वैल्यू equal हो जाएगी. What about the parallel forces? Parallel अब movement हो रही है, तो वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? Basically, we're talking about parallel to surface and perpendicular to surface. Surface के perspective से बात हो रही है. Perpendicular to surface and parallel to surface. जो perpendicular forces हैं surface के, वो तो equal हैं because movement इस direction में तो नहीं है. Movement तो along the plane है. तो perpendicular forces equal होनी चाहिए. वहां से आपके पास R की value आ जाएगी. I'll evaluate that in a moment. Parallel forces कौन सी है? Forward forces sin theta because it's moving down the plane. Backward force is friction. That should equal m into acceleration. Mass कितना है? Mass is 0.1 into acceleration. Acceleration कितनी आ गई हमारे पास? 0.4. ठीक है, that's the equation that we're getting. These are the equations that we're getting. Now, what about sin theta? Sin theta की value उसने दी हुई थी. Sin theta is 7/25. Let me just write that here on the side as well. Theta is sine inverse of 7/25. Okay, that means sin theta क्या हो जाएगा? It's going to be 7/25. Okay, what about cos theta then? हम इसको इस तरह से evaluate कर लेते हैं. Sin is perpendicular over hypotenuse, right? So P हमारे पास 7 आ गया, hypotenuse 25 आ गया. We can find the base from this. Base is square root of 25 का square minus 7 का square, and this should most likely be 24. Let me just confirm this. 625 minus 49 square root of that is 24. Yeah, so base 24 आ गई. Cos theta क्या आ गया? Cos theta is base over hypotenuse, which is 24/25. ये base cos की value भी आ गया हमारे पास. ठीक है, let's just input these values there. R is 24/25. ये resistance आ गई. लेफ्ट साइड पे sin theta input कर दें. 7/25 minus the friction. जब move कर रहे होते हैं object, friction is at its maximum value. Friction equals mu times R. So we can say mu into R. That equals 0.1 into 0.4. That's going to be 0.04. Values input कर दें यहाँ पे. R की value पे input कर दें. R is 24/25.
and you'll get the value of mu from this. उसने show करने के लिए कहा था it should be 0.25. Let's evaluate this. Minus mu. Let's actually take that there. 24 mu over 25. That equals 7 over 25 minus 0.04. ये evaluate कर ले. 7 divided by 25 minus 0.04 into 24. No, into 25 divided by 24. That's giving me 1 over 4. Mu equals 0.25. ये आपको show करना था. ठीक है? That was 6 marks. Again, not very complicated for 6 marks. आपने क्या किया? Inclined surface था. Reaction की value find कर ली. और फिर आपने along the plane Newton's second law RF equals ma apply कर दिया. All right, let's move on to the last part now. 7 part B. 7 part B में वो क्या कहता है? There's another bead B of mass 0.5 kilograms that is also threaded on the wire. Okay, so now there's another bead that is also threaded on the wire. Let me represent that here. I'm just going to draw that figure here again. Let's actually make it a bit smaller. This is fine. Okay, so this is the first bead. This is bead A. There's another bead that is somewhere here. This is, let's say, B. It has mass 0.5 kilograms. तो इसका weight कितना होगा? इसका weight होगा हमारे पास 5 Newton. ठीक है? Weight of the other bead is 5 Newton. Okay. At the point where A has traveled 0.45 meters down the wire, it hits B, which is instantaneously at rest on the wire. Okay. A नीचे move कर रहा था, remember? A नीचे move कर रहा था, इसने 0.45 meters नीचे move किया. जब वो यहाँ पे move किया, B was basically stationary at that point, और उसने जाके B को hit किया. Now, A is brought to instantaneous rest in the collision. Okay. Collision के फौरन बाद A rest पे आ जाता है. The coefficient of friction between the block and the wire is given. That is 0.275. Find the time taken when the collision occurs from when the collision occurs until A collides with B again. Okay. अभी देखिए collision आ गई है तो यहाँ पे momentum use होगा. ठीक है? Collision आ गई तो यहाँ पे momentum use होगा. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो collision के point पे देख लें आपकी velocities कितनी. ठीक है? Momentum क्या होता है? Mass into velocity. तो collision time वाले instance के ऊपर देखते हैं velocities हमारे पास क्या है. So at the time of collision, when A and B are colliding, let's say we have two scenarios here: before collision, and we've got after collision. What's happening before collision? Just at the point when they are colliding with each other. This is A, this is B. बिल्कुल साथ एक दूसरे के हैं. B instantaneous rest के ऊपर है. तो B की velocity कितनी है? B की velocity is essentially 0. Before collision, this is 0 meters per second. A किस velocity पे move कर रहा है? We actually just found that in the first part. In fact, it was given. उसने बताया हुआ था speed is 0.6. 0.45 meters move करने के बाद उसकी speed 0.6 है. 0.6 sorry. ठीक है? A की speed कितनी है? 0.6. ये before collision है. After collision क्या है? Collision के बिल्कुल फौरन बाद क्या होएगा? Collision के फौरन बाद उसने कहा है कि A rest पर आ गया है. A is at rest. A की speed कितनी होगी? 0 meters per second. What about the speed of B
वो हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो बी की स्पीड हमें फिगर आउट करते हैं। पहले लेट्स कॉल दिस वीबी, ये फिगर आउट कर लेते हैं। क्या करेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अच्छा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, mass of A was 1 into velocity of A, that is 0.6। दोनों एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, राइट? तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं, सारे पॉजिटिव ही होंगे। 1 into 0.6 plus the momentum of B, that's just 0 because उसकी velocity 0 है, or you can say 0.5। अच्छा नहीं, सॉरी, मास इसका कितना था, 0.1 था, A का मास 0.1 था, so 0.1 into 6, just for 0.5 into 0, that's the momentum before collision. Momentum after collision, mass of A, which is 0.1 into velocity of A, that's 0, mass of B, that is 0.5 into velocity of B, यहाँ से आपके पास velocity of B आ जाएगी। So we've got 0.06 equals 0.5 times velocity of B। ये आपके पास velocity of B आ गई just after collision। collision के फौरन बाद B की velocity आ गई, ठीक है? Let's figure this out। 0.5 divided by 0.06, sorry, the other way around, 0.06 divided by 0.5, that gives me 0.12। This is the velocity of B, 0.12 meters per second। हमने क्या find किया है? This is the velocity of B just after collision। कोलाइड करने के फौरन बाद B की वेलोसिटी है, ठीक है? A की वेलोसिटी क्या है कोलाइड करने के फौरन बाद? दैट इज 0 meters per second। ऑलराइट, अच्छा, अब उसने क्या कहा है, फाइंड द टाइम टेकन फ्रॉम व्हेन द कोलिजन अकर्स until A collides with B again। अब इस पॉइंट से ये कोलिजन हो गई, इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स ये दोनों पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे फिर से। इनिशियली B की स्पीड ज्यादा है, तो वो आगे मूव कर जाएगा, A की स्पीड 0 है, पर एट सम पॉइंट दे आर गोइंग टू कोलाइड अगेन। नीचे जाके, इस प्लेन पे नीचे जाके ये दोबारा कोलाइड कर जाएंगे एक दूसरे से किसी पॉइंट के ऊपर। हमें टाइम फाइंड करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना टाइम लगे इस दोबारा कोलिजन होने में, ठीक है? नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस नाउ। अब नीचे वाले पार्ट के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन, नीचे वाले पार्ट के लिए हमें क्या पता है? वी नो डिस्टेंस तो नहीं पता, हमें वेलोसिटीज पता है, इनिशियल वेलोसिटीज पता है, initial velocity of A and the initial velocity of B, we know them। A की वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट के ऊपर? दैट इज 0 meters per second। B की कितनी है? B की वेलोसिटी इज राइट आफ्टर कोलिजन, दैट इज 0.6 meters per second। इस वेलोसिटी से वो दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नो, ओके? अब और क्या हमें पता है इसके अलावा? डिस्टेंस नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, और इसके अलावा में अभी इस पॉइंट पे कुछ नहीं पता। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन थिंक अबाउट फोर्सेस। ए और बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, उनसे हम किसी तरह से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ए की एक्सेलरेशन तो हमें पता है, ए के ऊपर तो अभी भी वही फोर्सेस है ना। we've got 1 Newton acting downwards, we've got the same friction as before, right? And these are the only two forces, right? weight का कंपोनेंट नीचे को लग रहा है और फ्रिक्शन लग रही है, तो एक ही एक्सेलरेशन तो दोबारा से वही होगी जो पहले थी। what was that? That was 0.4। A की acceleration तो वही है आपके पास, ठीक है? Let me write that here। This is particle A and particle B। For A, we know the acceleration already। We know the initial speed is 0, acceleration is 0.4। ये हमने पिछले पार्ट में फाइंड की थी, वो तो चेंज नहीं हो रही बिकॉज A के ऊपर फोर्सेस कोई चेंज नहीं हुई है, ये सारी वही फोर्सेस लग रही है जो पहले फोर्सेस लग रही है, ठीक है? What about B? B की acceleration हमें find करनी पड़ेगी। We can use the same method that we used for A earlier to find acceleration for B। क्या करेंगे? B के ऊपर forces देख लें कौन सी लग रही हैं। We got this 5 Newton acting here। Coefficient of friction उसने बता दिया, उससे हम friction निकाल सकते हैं। There's going to be friction that's acting in this direction on B। There's going to be this reaction, and that's it। ये आपकी forces है।
5 न्यूटन का रिजॉल्व कर लें। 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट यहाँ पे लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर लगेगा, दैट इज 5 sin थीटा। ठीक है, दीज आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन बी। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आर इज 5 cos थीटा, आर इज 5 cos थीटा। पैरेलल फोर्सेस कौन सी है, 5 sin थीटा एंड एफ। नीचे का मूवमेंट है, फॉरवर्ड फोर्सेस 5 sin थीटा minus the backward force, that is friction. This should equal mass of B, which is 0.5 into acceleration. ठीक है, अब क्योंकि मूवमेंट है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी आपके पास न्यू टाइम्स आर एज बिफोर। साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पता है पहले से। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा वाज 7/25, कॉस वाज 24/25। लेट्स जस्ट इनपुट देम हियर, 7/25 minus mu into r, that equals 0.5 times a. R equals 5 into 24/25. Okay, अब इसमें इनपुट कर दें। We have 7/5 here minus mu की वैल्यू इसने बताई है 0.275 into r is 24/5. That equals 0.5 times acceleration. यहां से हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, लेट्स इवैल्यूएट दिस। a की वैल्यू यहां से निकाल लें, देख लें क्या आती है आपके पास। 7/5 minus 0.275 into 24 divided by 5, that gives me 2/25, and that is equal to 0.08. Start 0.08 और उसके बाद डिवाइड किया 0.5 के साथ, that's 4/25, which is 16. So directly लिख देते हैं, 0.5 times a equals 0.08 and a equals 0.16. a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.16. This is the acceleration of b. b की acceleration आ गई। b के बारे में और क्या पता है, b के बारे में ये पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी was 0.6. These are the two pieces of information that we've got for b. ये दो pieces of information a के लिए हैं, दो हमारे पास b के लिए हैं। What do we want? We want to find the time taken for them to collide again. जब दोबारा collision होगी, दोबारा collision का क्या मतलब है, इस starting point से सेम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे वो, तो दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जब दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, दैट इज व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, राइट। इस पॉइंट से जहां पे वो फर्स्ट टाइम कोलाइड किया था उन्होंने, तब तक जहां पे वो सेकंड टाइम कोलाइड कर रहे हैं, दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट दोनों की इक्वल है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों के डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, उनको इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है ना। तो हम कहते हैं हमें टाइम तो नहीं पता, टाइम दोनों का सेम ही होगा जितना भी होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है तीन एस ए यू और टी को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी कैन से दिस इज 0t plus half into a, that is 0.4 into t square. On the right side we've got displacement of b, which is u, that's 0.6 into t plus half into 0.16 into t square. We'll solve this equation, we'll get the value of t from this. Let's solve this. We have 1/t square, 1/2t square, no, 1/2 into 0.4, that's going to be 0.2t square. On the right side, we've got 0.6t plus 0.08 t square. Let's take everything to left side. हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.12 t square minus 0.6 t equals 0. We can take t common here. 0.12 t minus 0.6, that equals 0. Let me just check the calculation again. 0t
plus half into 0.4 t squared, and on the other side I've got 0.60. That was the initial velocity of that of the particle B. Initial velocity of particle B, that was actually, oh sorry about that. So initial velocity of particle B हमारे पास यहाँ पे आ रही थी 0.12. This was actually 0.12. हमारे पास ये velocity थी, हमने ये calculate की थी. This should have been 0.12. Let me change that here. ये होनी चाहिए 0.12. (0.12t plus half into 0.16 into t square. That is fine. Yeah, so I'm sorry about that. यहाँ पे मैंने गलती से 0.06 लिख दिया था. यहाँ मैं speed जो find की थी, that was actually 0.12. So it should have been 0.12 there. इसको मैं change कर रहा हूँ यहाँ पे. This should have been 0.12t. 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 And that gives me either t equals 0 or 0.12t minus 0.12 equals 0. And t equals 1 from this. T equals 0. T equals 0 तो आपके पास वही वैल्यू है जब वो स्टार्टिंग पॉइंट है. जो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी इनके डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट दैट. हमें दूसरा पॉइंट चाहिए जहाँ पे उनकी डिस्प्लेसमेंट दोबारा से इक्वल होती है. दैट इज टाइम इक्वल्स 1. जब टाइम की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट इज व्हेन their displacements become equal again, and that's when they collide with each other. Okay, तो आपको ये फाइंड करना था दूसरे पार्ट के अंदर. Okay, so this was a fairly straightforward exam, but you saw there is a lot of potential of doing careless errors and such easy exams as well. So you have to make sure for one that you have had proper sleep. आपकी नींद पूरी होनी चाहिए. That's going to be very important because that really matters. And that's it for this question. This was March 2022, paper 4. And that's it. ये हमने पूरा कर लिया. That's it for today. In the next session that we will have, I don't know when, maybe the day after tomorrow. I'm not sure about tomorrow, if I'll be able to do it tomorrow because of some commitments. So we might have the next session the day after tomorrow. लेकिन हम अब क्या कर रहे होंगे? In all the sessions from now on until our first paper 1 exam, we're going to be focusing on P1s. ठीक है? हम बाकी papers अब नहीं कर रहे होंगे. We're going to put a hold on them. हम सिर्फ P1s करेंगे in the next few sessions that we have. So we're going to start from March 2021 now. Next हमारा जो paper होगा वो P1 March 2021 होगा. And then we'll go backwards from that, October, November 2020, June 2020, and we'll see if we can do March 2020 as well, inshallah. ठीक है? हम सिर्फ paper 1s कर रहे होंगे for the next few days. दरम्यान में ईद भी आ जाएगी, तो ईद वाले दिन I don't think I'll be doing a class. That will be a break. और कल का I'm not sure कल क्या होगा, but on other days after Eid, I'll try if I can do more than one paper in a day, maybe with some break in the middle because I won't have other classes going on, so I have more time. तो हो सकता है कि हम उन दिनों में फिर ज़्यादा time कर लें, inshallah spend. ठीक है? So that's it for now. If you have any questions, let me know. Fazan, you had a question in the middle. You want to ask that right now, or is it okay? No? Yeah. So वो clear हो गया था ना, वो forces वाले method से कर सकते थे वो. So yeah. ठीक है? So that's it. I'll see you again in the next session. In the next session, whenever we have it, tomorrow or the day after tomorrow, we will be doing March 2021 paper 1, inshallah. Okay? All right. Allah Hafiz. See you again. Yes, class time जो है वो भी रमजान के बाद अगर तो कल क्लास होती है, कल तो इसी टाइम होगी,
But after Ramadan, I will actually push it a bit earlier. So maybe around 9:30 we'll start earlier. और अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास करता हूँ उसके अलावा, that would be sometime in the evening, maybe around 3-4 p.m. जिसमें अगर हम एक दिन में 2 पेपर्स करें तो वो भी हो शायद हो if I get time for that. तो एक तो हमारा टाइम around 9:30 होगा. I'm going to push it a bit earlier. ये जो current time है, और उसके अलावा I might do one in the sometime in the afternoon. But I'll confirm that as well. ठीक है? All right. Anything else? ठीक है. That's it then. Allah Hafiz.